LC minus 1 R upon L का whole square. So for this circuit, your resonant frequency is this. Okay. Now, when you put your imaginary part is equals to 0. Check this. When you put imaginary part is equals to 0, then your admittance is remaining part of this. The remaining part of admittance is this. Okay. So इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, देखते हैं हमारा डायनेमिक इंपीडेंस क्या आएगा. So I think ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. So अब अगर यहाँ से देखें, so your admittance is this. It is y equals to r upon r square plus xl square. Now what is the dynamic impedance? Is 1 by y. So just put this value. So it is r upon r square plus xl square. So it is just above xl square upon r. ठीक है यार. अब अगर आगे हम देखें तो r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r. अगर ये हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहे हैं और ये इक्वेशन हमारी थी फर्स्ट. ठीक है. तो अब करते क्या है, इस इक्वेशन 2 से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो देखिए क्या आएगी. देखते हैं क्या आता है. सो जस्ट पुट दैट वैल्यू ZD equals to R square plus what is the value of omega square? So omega square is what? It is L square बाहर और ये हमारे पास रहा 1 upon LC minus R square upon L square. ठीक है. So divide by R. So it is R square plus L square से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे. So एक L से L कैंसिल हो जाएगा. It is L by C minus R square अपॉन R. ठीक है यहां तक. सो R से R तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ऊपर L बाई C इंटू R. और इसको अगर हम लिखें तो ZD इज इक्वल्स टू L अपॉन RC. ठीक है. सो इट इज योर डायनामिक इंपीडेंस दैट इज आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, L अपॉन RC. ठीक है. सो पहले मैं इसको बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूं. So it is the impedance offered by the circuit at resonance, that is ZD is here L upon RC. ठीक है यहाँ तक. So this is one for the parallel circuit, but I'm telling you that ZD is always greater than R. How it is greater than R? Let's see. मिटा देना इसको, तो मिटा देता हूं मैं इसको. So अगर हम बात करें एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पर. अगर मैं पहले सीरीज रेजोनेंस की बात करूं, सीरीज रेजोनेंस, अगर मैं सीरीज रेजोनेंस की बात करता हूं तो देखिए क्या आएगा. सीरीज रेजोनेंस पे Z इक्वल्स टू था R प्लस J XL माइनस XC एंड दिस टेंड्स टू 0. सो डायनेमिक इंपीडेंस ऑफ आइडियल सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज R. ओके, R. बट फॉर द प्रैक्टिकल सर्किट ZD इज ऑलवेज ग्रेटर देन R. क्लियर है यहाँ तक. सो फॉर योर परफेक्ट सीरीज रेजोनेंस सर्किट योर ZD is R, but here it is L upon RC. So this is about the dynamic impedance. For different circuit you can calculate the dynamic impedance by what? Just take your impedance or admittance part, admittance or impedance imaginary part 0, then you calculate the resonant frequency. Then you have only the real part of the either the impedance or admittance. In that you just put your resonant frequency and you will get your dynamic impedance. So अब तक जो है हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है रेजोनेंस से रिलेटेड. अब जो है हमारा न्यूमेरिकल रह गए, तो न्यूमेरिकल को और देख लेते हैं और बाकी सारे फॉर्मूले आप दिमाग में रखिएगा जिससे कि न्यूमेरिकल करते समय थोड़ी सी आसानी रहे. सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स ऑन द रेजोनेंस. तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं रेजोनेंस पे क्या है. सो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स ऑन द रेजोनेंस. सो पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा है रेजोनेंस पे. देखिए क्या है. ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ए सीरीज रेजोनेंट circuit implies, the circuit implies, पहला ऑप्शन जो है आपका है
जीरो पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है आपका देखते हैं क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट। अगला जो ऑप्शन है वो आपका है सी, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एंड मिनिमम करंट एंड मिनिमम करंट। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका है जीरो पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर एंड मिनिमम करंट एंड मिनिमम करंट। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर ना। सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, नाउ इफ यू रिमेंबर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, at series resonance, at series resonance XL is equals to XC. This is the condition for the series resonance, okay? But the total impedance is R plus J XL minus XC, and this is 0. So ZT is equals to R, but R is minimum. That is minimum now. So total impedance is minimum. So let's take the answer. The first answer, that should be the impedance minimum. Now impedance minimum is not present. So I is what? I is what? V upon Z, and Z is minimum, so current is maximum. So choose that option where current is maximum. So in which option current is maximum? Yes, this one and this one. So this option is wrong, this option is wrong. Okay, similarly the power factor. Now if you remember the power factor, when a circuit is completely resistive, circuit is completely resistive, then power factor is what? Power factor is unity. Power factor is unity, so we have unity power factor and maximum current. So A option is also wrong because here the power factor is 0, so that's why it is wrong. So our option number B is correct. Okay, so for series resonance the power factor is unity because circuit is resistive, and the impedance is minimum, that's why current is maximum, and also the series resonance circuit is called acceptor circuit. Okay, so देखते हैं next numerical क्या है हमारा। Now moving to the next numerical. So for an RLC circuit, for an RLC AC circuit, for an RLC AC series circuit at resonance the current is पहला ऑप्शन जो है हमारा मिनिमम एट लीडिंग पावर फैक्टर, मिनिमम एट लीडिंग पावर फैक्टर, ये तो हो गया ए ऑप्शन। अगला बी ऑप्शन जो है हमारा है मिनिमम एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक। इससे अगला जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन है, उसमें क्या है मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर, और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा है मैक्सिमम एट
लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है यहां तक। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। फॉर एन आरएलसी सीरीज सर्किट द सर्किट रेजोनेंस एट, नाउ इफ यू रिमेंबर योर सीरीज रेजोनेंस थ्योरी, at series resonance, at series resonance the impedance ZT is R plus J XL minus XC, and for the resonance condition the imaginary part should be equals to 0, and your ZT is R, that is minimum. Okay, so impedance minimum, then current is what? Maximum. And when circuit is resistive, the current is at unity power factor. Okay, so either it is series resonance or parallel resonance, your power factor is unity, and either of the circuit, if you, the question is about resonance, at resonance power factor is unity, because the imaginary term of the impedance or the admittance should be 0. When imaginary term is 0, the only real term, and there is a real term, and real element is what? Resistive, and for the resistive the power factor is unity. So just keep in your mind, for resonance the power factor is always unity, but current is either the minimum or maximum, that upon the type of resonance. So इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो मिनिमम को काट दीजिए, या देख लीजिए उल्टा देख लेते हैं, मैक्सिमम होगी, बट पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए? बस यूनिटी। पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए? यूनिटी और मैक्सिमम। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सीरीज आरएलसी सर्किट, ए सीरीज RLC circuit. The series RLC circuit resonates at 1 megahertz. 1 megahertz. Okay. If frequency is 1.1 megahertz, then the circuit impedance, will be okay। पहला ऑप्शन है हमारा रेजिस्टिव, अगला जो ऑप्शन है हमारा है will depend on the relative amplitude, amplitude of L and C। अगला ऑप्शन जो है हमारा सी, कैपेसिटिव, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंडक्टिव। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ठीक है यहां तक। सो a series RLC circuit resonates at 1 megahertz. If the frequency is 1.1 megahertz, then the circuit impedance is, now first your resonant frequency is 1 megahertz and the given frequency is 1.1 megahertz. So this is talking about the frequency greater than the resonant frequency. So if you remember your impedance versus frequency curve, then it is look like that. If you remember, okay, this is the point where f0, and f0 is how much? 1 megahertz. So this is a region where frequency is less than the 1 megahertz, and this is a region where the frequency is greater than 1 megahertz. Okay, now
So when frequency is low, frequency is high, your impedance is Z. What is Z? Equals to R plus J XL minus XC. Okay, your XL is directly proportional to frequency and XC is inversely proportional to frequency. Now if frequency is greater than high end, that is greater than the resonant frequency, then frequency is high, XC is low, and when frequency is high, it is low. So it is XL is greater than XC. So this is the zone when your frequency is greater than the resonant frequency. It is XL is greater than XC. So it should be XL is less than XC. Okay. So your circuit is inductive. Is there any option? Yes, we are having the inductive option. Now if you want to solve such type problem, then you have a clear picture of your impedance versus frequency curve, current versus frequency curve, or the angle versus frequency curve. Then you can have the direct option of your question. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Now moving to the next question. Now next question है हमारा, the bandwidth of the bandwidth of an AC series circuit consisting of R, L and C is. Okay, option है, the first option is L upon R. B जो ऑप्शन है वो है आपका R by L, and your C option is L upon RC, and D ऑप्शन जो है आपका है RC by L. तो देखते हैं क्या होगा. So the bandwidth of an AC series circuit. Now if you remember your series circuit, okay. So if you remember, for series circuit, the bandwidth is R by L in terms of radian per second, and it is also R upon 2 pi L in case of hertz. For your parallel resonance, your bandwidth is 1 upon RC. ठीक है. So what is the option? Your B option is correct. Now in the A option, it is the given of time constant tau equals to L by R. It is a L by R. Okay, your option B is correct. But in the option A, it is the given option is according to the time constant. The B is your bandwidth, but this is your dynamic impedance. If you remember, it is ZD. ZD is what? L upon RC. Okay, and it is just impedance, dynamic admittance, because YD is equals to 1 upon ZD, then it is what? L upon RC, then it is RC upon L. So they have all the option, but we have to pick the correct one option. Okay, so for this question, the answer is B. Moving to the next question. So देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. Now at series resonance, of an AC RLC circuit, the impressed voltage
द इम्प्रेस वोल्टेज इज, हमारा पहला ऑप्शन जो है इक्वल टू द resistive drop. Now the B option is so what are the options? Let's see. Yeah, the options are equal to the capacitive drop. Then we have the C option, greater than the resistive drop, और D ऑप्शन है हमारा इक्वल टू द इंडक्टिव ड्रॉप, ठीक है यहाँ तक। सो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा इसका भी ना। At series resonance of an RLC circuit, first thing they are talking about the series resonance. Okay, so ये ध्यान रखिएगा कि सीरीज है या पैरेलल। The impressed voltage, the input voltage, impressed means input voltage, it is input voltage जो है वो किसके बराबर होगा देखते हैं। So if you have the series resonance, and for the series resonance all should be in series, ठीक है। So if you having the knowledge of your KVL, then let's see, V minus VR, it is VR minus VL minus VC equals to 0, then V is what? VR plus VL plus VC. This is a phasor equation. Now what is the rectangular equation? VR plus J VL minus VC. This is the equation of the series circuit. Now at series resonance, XL is equals to XE. Now if you multiply I by both sides, then it is IXL into IXE, then it is VL equals to VC, ठीक है यहाँ तक। So just put VL equals to VC here, just put this value. So V is equals to VR plus J0. So what is it? This is the input voltage here. So where the input voltage is going on, the input voltages drop across the resistive circuit. So in series resonance, the total input voltage is across the resistance. Similarly, in case of parallel circuit, the total supply current is through the resistive current, because in series circuit your LC combination behaves as a short circuit, and in the parallel resonance your LC parallel combination behaves as an open circuit. That's why the total voltage is across the resistive drop, so is equal to the resistive drop. So option number A is correct. Let's see the next question. So moving to the next question, let's take next numerical on the resonance. Okay, so next numerical is a series RLC circuit. A series RLC circuit will have unity power factor if operating at a frequency of ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है 1/2π √LC। बी ऑप्शन जो है आपका है LC। सी ऑप्शन जो है आपका है 1/LC।
जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका है डी, दैट इज 1/√LC। ठीक है यहाँ तक। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा इसका। सीरीज RLC circuit will have unity power factor if operating at a frequency of hertz। ठीक है, तो हर्ट्ज में सबसे पहली बात हर्ट्ज में पूछा है, सो हर्ट्ज में निकालने के लिए ध्यान रखिएगा क्या करना होगा। सो एट सीरीज रेजोनेंस XL is equals to XC, then omega naught L is equals to 1/omega naught C, and omega naught is equals to 1/√LC। ठीक है यहाँ तक। So this is in radian per second. This is in radian per second. But what they are demanding? They are demanding for hertz. If you have the radian per second answer, then you will choose D. But they are asking for hertz. Then omega naught is what? 2 pi f naught equals to 1/√LC, and f naught is what? 1/2 pi root LC। That's it, that is in hertz। ठीक है यहाँ तक। सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो आई थिंक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, बट अगर रेडियन पर सेकंड में पूछा जाता तो आंसर कौन सा सही होता? डी सही होता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So next question is a tank circuit. A tank circuit consists of a tank circuit consists of first option an inductor and capacitor connected in series, ठीक है यहाँ तक। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यह एन इंडक्टर and a capacitor in parallel। ठीक है यहाँ तक। आई थिंक इधर इज ऑल्सो ए। सी ऑप्शन जो है हमारा वो है ए प्योर इंडक्टेंस and a pure capacitance inductor and a pure capacitance connected in series, ठीक है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है a pure inductance and a pure capacitance connected in parallel। सो देखते हैं क्या मीनिंग है इस टैंक सर्किट का। ठीक है यहाँ तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो अगर आपने देखा मैंने एक प्रैक्टिकल टैंक सर्किट बनाया था एंड जस्ट इट इज द प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। क्लियर है? दिस वाज योर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। ठीक है यहाँ तक। आर एल और सी। ठीक है। Now, what should be the condition for ideal tank circuit? Now, for ideal tank circuit, there should not be any resistance and there should be perfect capacitor.
Okay, so this one is your ideal tank circuit. ठीक है यहाँ तक. So according to question, a ideal tank circuit should be an pure inductor and a pure capacitor in parallel. So option D is correct. Option D is correct because an ideal tank circuit is an circuit in which a pure inductor and pure capacitor is connected in series. Now, what are the some conclusion? If you remember, omega naught is equals to what? How much? If you remember, it is 1 by LC minus R upon L square. Now, when R is 0, when R is, this is the resonant frequency for this circuit, and what is the resonant frequency for this circuit? Then it is here R is 0 now. Just put R 0, then it is only 1 upon, just wait, it is 1 upon L by C minus R by the whole square. So for the ideal tank circuit, what are the answer? It is 1 by LC. Okay. ठीक है यहाँ तक. I think ये भी गलत लिखा हुआ है. It is LC minus R upon L का whole square. So this is the resonant frequency for your ideal tank circuit. क्योंकि ये भी कोई जब tank circuit पूछा जा सकता है तो उससे related question और भी बनते हैं. अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा यहाँ पे जो डायनेमिक इम्पीडेंस था वो कितना था? L upon RC. ठीक है. तो अगर यहाँ की बात करें तो इसका डायनेमिक इम्पीडेंस कितना होगा? R0. सो इट इज इनफाइनाइट. ओके. सिमिलरली अगर मैं बात करूं डायनेमिक एडमिटेंस किसकी बात करूं तो ये क्या हुआ? इट इज RC अपॉन L, बट इसका डायनेमिक इम्पीडेंस क्या होगा? 0. ठीक है यहाँ तक. सो दीज आर द सम कंक्लूजन फॉर योर प्रैक्टिकल वर्सेस आइडियल tank circuit. Hopefully ये बात समझ में आ गई होगी. Now moving to the next numerical. Our next numerical is in a series RLC circuit. In a series RLC circuit, the quality factor Q is given by okay. सो ऑप्शन है आपके क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाई आर रूट एल बाई सी. और यहां से अगर देखें तो क्वालिटी फैक्टर जो है आर रूट एल बाई सी. सी जो ऑप्शन है वो है आपका क्यू इक्वल्स टू 1 बाई आर रूट सी बाई एल. और लास्ट जो ऑप्शन है आपका Q इक्वल्स टू आर सी ऑन रूट. ठीक है. यहाँ तो ये रहे आपके ऑप्शन. ठीक. सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. क्या है इसका सोल्यूशन? नाउ सोल्यूशन. नाउ इफ यू रिमेंबर योर क्वालिटी फैक्टर फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज ओमेगा नॉट एल बाई आर. ठीक है. या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट, या आपको प्रूफ करना आना चाहिए. दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए. What is the omega naught L? It is 1 upon root LC into L upon R. ठीक है यहाँ तक. So it is 1 upon L की पावर 1 by 2, C की पावर 1 by 2 into L and it is R. Okay. ठीक है यहाँ तक ना. ये इसकी पावर हो गई 1. इसको सॉल्व करते हैं तो अगर 1 में से 1 by 2 पावर जाएगी तो पॉजिटिव 1 by 2 पावर बचेगी. नीचे है 1 by 2 पावर और नीचे रहा R. सो हाफ पावर को लिख सकते हैं हम रूट. सो 1 बाई आर तो बाहर ले लिया. इसको क्या लिख सकते हैं हम? L अपॉन C. ठीक है. सो फॉर द सीरीज सर्किट योर क्वालिटी फैक्टर शुड बी दिस. फॉर द सीरीज सर्किट योर क्वालिटी फैक्टर शुड बी दिस. चेक कर लीजिए ऑप्शन 1 बाई आर एल बाई सी. 1 बाई आर एल बाई सी. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 101% करेक्ट. नाउ
If they are asking for the parallel resonance circuit, then just replace R by R, just opposite C by L. Is there any option for the parallel? So it is in for parallel. Let's check. No. So